चिकित्सा सेवाओं में ड्रोन तकनीक के नवाचार से नई रफ्तार मिलेगी। जयपुर की महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी की ओर से इसकी पहल की गई है। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुकांत दास और मार्केटिंग निदेशक वीरेंद्र पारेक ने बताया कि ब्रेन डेड के बाद प्राप्त अंगों का प्रत्यारोपण एक निर्धारित समय सीमा में संभव होता है। अब तक इसके लिए एम्बुलेंस और प्रशासन द्वारा बनाए ग्रीन कॉरिडोर का उपयोग किया जाता है, लेकिन ड्रोन तकनीक के माध्यम से ट्रैफिक दूरी और समय की बाधाओं को समाप्त कर अंगों को बहुत कम समय में एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक सुरक्षित पहुंचाया जा सकेगा। Along with Magic Myna, and will use for the saving the life of the patients and during remote area also, and in case of emergency accident also in the heavy traffic area, so drone can be used to upload the life-saving drugs and equipments also in the particular area. Thirdly, primarily we will use it for the transportation of organ like liver or kidney from airport to our center, so that it will save the time and it can be directly reached to the hospital, and then OT also will be transported. And in case of fire or emergency, this drone can be used in the top 7th, 8th or the top vertical buildings, and it can be dropped in the firewall during particular area, and lives of the people can be saved. So this is our aim initially.